Hi everyone, this is CBSE and today in this session we will be starting a very new chapter, that is chemical reactions and equations. Now ये chapter बहुत interesting है. Why? Because इस chapter में हम अपने changes जो भी हमारे environment में changes होते हैं उन सभी changes को हम classify करने वाले, उन सभी changes को हम observe करने वाले and उन्हीं changes के basis पे हम ये पूरा का पूरा chapter जो है वो समझने वाले हैं. So before starting the chapter, let's discuss about the changes around us. So just a very simple question from everyone, that let's suppose that our mom has boiled the milk, right? And after boiling, she forgets to keep it in the refrigerator during the summer season. So what will happen? Anyone who is going to answer this? Yes, exactly. The milk will become sour. Milk khatta ho jayega, right? And in native language we'll say that milk जो है दूध जो है वो फट जाएगा. Now in the same way we have another example here, and that example is of iron tawa. We might have seen an iron tawa in our house, right? Everyone, okay. So we have iron tawa, we have iron pan, we have nails also which is made up of irons. अगर उन nails को, अगर उन तवा को मैं क्या करूँ, I am going to expose it in the humid atmosphere. Now what does the humid atmosphere means? Humid atmosphere means that it is going to contain what? It is going to contain the water, that is H2O, right? Now if I talk about the humid atmosphere, उस humid atmosphere में oxygen भी तो present होगा. So what will happen? जो आयरन है वो रिएक्ट करेगा वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एक रेडिश ब्राउन कंपाउंड बनाएगा. वी आर गोइंग टू सी दैट ये रेडिश ब्राउन कंपाउंड क्या होता है. नाउ नेक्स्ट वी हैव क्रशिंग अ कैन. सो एक कैन है जिसमें वी जनरली ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स, उसको मैं क्रश कर दे, ये भी एक तरह का चेंज है. ग्रेप्स में फर्मेंटेशन हो रहा है, दिस इज ऑल्सो अ चेंज. टीयरिंग ऑफ पेपर, ये भी तो एक चेंज है. यस और नो. एंड food gets digested in our body. Obviously we all eat food, we all consume food, और उस food का क्या होता है, वो food हमारे body में digest होता है. And most important thing, that is respiration. We all respire. So let us see that ये सारे changes को हम किस category में रखेंगे, ये सारे changes जो है किस तरह से हमें इस chapter को समझने में help करेंगे. So are you ready for this? Okay, so let's move on to the next section of this chapter, which says about the physical change. So anyone who is aware of the physical change? Okay, so let's discuss the physical change in a very detailed manner. So let's suppose that there is a substance which is undergoing a change, but उसमें जो चेंज हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ है. जब कभी भी किसी भी सब्सटेंस में चेंजेस हो रहा हो और वो सब्सटेंस अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करे, देन दैट कंडीशन इज नोन एज व्हाट? फिजिकल चेंज. डू यू वांट टू सी एनी एग्जांपल? लेट्स क्विकली चेक द एग्जांपल ऑफ द फिजिकल चेंज. सो वन ऑफ द मेजर example of the physical changes in front of us, that is the conversion of ice into water. Yes, it is a physical change. Now how it is a physical change? See, if I ask you the formula of ice, what you're going to say? H2O. Exactly, you're not going to say any other things, right? Ice is what? It is basically what? It is a frozen state of water. So we can say that the formula for the ice is H2O. And if I ask anyone that what is the formula for water, again you're going to say the formula for the water is also H2O. So I hope that this is clear to you all. So can you see this? सिर्फ और सिर्फ physical state में यहाँ पे change हुआ. आइस जो एक सॉलिड फॉर्म में था, इट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड फॉर्म, दैट इज वाटर.
ऐसा नहीं हुआ कि आइस और वाटर, आइस जो है वो नए कंपाउंड में बन गया, नया मटेरियल में बन गया, या आइस जो है मेल्ट करने के बाद उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हो गया. नो, what actually happened is that just the change of physical state, or we can say just the change of physical properties. So this is what a physical change means. Now let us move on and let us discuss the another change. Let's see what that change is. So any guesses? We have discussed physical change. Now what next we are going to discuss? Exactly, we are going to discuss about the chemical change. So let us see what chemical change actually is. Now again, let's discuss the chemical change with the help of a definition first. So if we go with the definition, it says what? It says the process in which what? In which new substance with different properties are formed. This is what actually chemical change means. That means एक नया सब्सटेंस बन रहा है नए प्रॉपर्टीज के साथ, इस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज बोलेंगे. Now let's quickly check the example of the chemical change. So here we have what? We have iron. Let's write Fe, which is the chemical formula for the iron. Now this iron is what? It is exposed in oxygen and water. Now as soon as जब भी हम इस आयरन को ऑक्सीजन एंड वाटर में एक्सपोज करेंगे, और बेसिकली वी कैन से जब भी आयरन ऑक्सीजन और H2O से रिएक्ट करेगा, देयर विल बी व्हाट? देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड विच इज नोन एज व्हाट? एनी गेसेस? एनी गेसेस एवरीवन? So the compound name is what? The compound name is iron oxide. So can you see this? Now there is a formation of a new substance, iron oxide. And this iron oxide is what? If I talk about its color, it is reddish brown in color. It is reddish brown in color. Now I hope that it's clear to you all कि iron के ऊपर reddish brown color जैसा क्या होता है? That is actually iron oxide. And you can see it in daily the things which we use in our daily life, जैसे कि आयरन पैन, उसमें भी कभी रस्ट आ जाता है. लाइक नेल्स को मैं एक्सपोज कर दूं एटमॉस्फेयर में, इसके ऊपर भी आयरन ऑक्साइड की लेयर आ जाती है. नाउ डू यू नो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? एनीवन? यस, वेरी गुड. इट इज कॉल्ड एज रस्टिंग. So this was all about the physical and the chemical changes. Now we have bunch of changes which we discussed before starting the chapter. Let's get back to it. And I would like to, I would like you all to guess whether they are the chemical changes or physical changes. Okay everyone, so let's start. If I talk about the first one, that is milk is left at room temperature during summers, will it be physical change or a chemical change? Yes, exactly. This will be what? This will be a chemical change. Now why it will be a chemical change? Because यहाँ पे milk की chemical properties change हो जा रही है, right? Milk is what? Actually milk के proteins जो है वो भी coagulate हो जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं. So we will consider this as a chemical change. Again, आयरन तवा में क्या हो रहा है? इन आयरन तवा there is what? There is a deposition, there is a formation of a layer of iron oxide. So obviously this will be considered as a chemical change. Now what about next? If I talk about crushing of a can, we're just crushing it, right? शेप चेंज हो रहा, और तो कुछ चेंज नहीं हो रहा. ऐसा तो नहीं हो रहा when we are crushing the can, वो जो कैन आयरन से बना हुआ वो किसी और सब्सटेंस से बन जा रहा है? नहीं. Just the physical property is changing. So we will do what? We'll just write that crushing of can is a physical change. Now let's move on to the next one, that is fermentation. That is grapes get fermented. ये भी क्या होगा? ये भी एक केमिकल चेंज होगा. Why? Because fermentation में क्या होता है? फर्मेंटेशन में अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है. दैट मीन्स एक नया कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे. सो दैट्स वाई इस प्रोसेस को भी हम केमिकल चेंजेस में कंसिडर करेंगे.
Next, going with the next example, that is tearing of paper. Anyone? Yes, it will be physical change. Whenever we are tearing the paper, papers के छोटे टुकड़े हो जाते हैं, पेपर किसी नई सब्सटेंस में नहीं कन्वर्ट हो जाता, राइट? Okay. Now, next example is food gets digested in our body. So, anyone who would like to answer this? Yes, it's a chemical change. That's very good. Why we are considering this as a chemical change? See, suppose I am eating starch. मैं starch consume कर रहा हूँ. वो starch जो है मेरे body में जाके ग्लूकोज में टूट जाएगा. So, can you see this? Starch खाया था मैंने एंड मेरे बॉडी में जाके वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो गया. सो इट्स अ केमिकल चेंज. इट्स नए सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव इज द ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास. सो यस, जब भी हमारे से कांच के बर्तन घर पे टूट जाते हैं, सो जो पीसेस है वो ग्लास के ही रहते हैं. डजंट हैपन्स दैट अगर हमसे वो यूटेंसिल से जो ब्रेक हो गए, ब्रेक पार्ट जो है, ब्रोकन पार्ट जो एक नया सब्सटेंस बना लेगा. नो, इट रिमेन्स ग्लास ओनली. सो इट इज ऑल्सो कंसिडर एज व्हाट? एज अ फिजिकल चेंज. नाउ we have discussed about the changes. Now we are going to discuss the main part in the chapter, that is what is our chemical reactions. Since we are going to discuss the chemical reactions, we should know that what exactly a chemical reaction means. Now, first of all, let us go with the definitions of the chemical reaction. So, in this, it has been written that the process in which new substance with different properties are formed. Now, definition से तो चीजें अच्छे से clear नहीं होती. So, for that, we need to see an example. So, let's see. Now let us consider this example, and here we have Na, which is called as sodium, and here we have the chlorine, which is called as Cl. Now this sodium is basically found in solid state. General ये solid state में रहता है. And if I talk about the chlorine, so this chlorine is found in gaseous state, right? Now अब हमें क्या करना है? इस sodium and chlorine की reaction करानी है. So now if I talk about the reaction हो गया. रिएक्शन करने के बाद हमें एक कंपाउंड मिला, and that is what? That is NaCl. Now if I talk about this NaCl, can you think about this NaCl? क्या इनकी प्रॉपर्टी सोडियम और क्लोरीन से मिल रही है? क्या ये गैसियस फॉर्म में है? नहीं. सो एक्चुअली क्या हुआ? केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, नए बॉन्ड्स बने, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस. So this is what actually happening in the chemical reaction. That is, नए substance का formation होता है, और वो जो नई substance है वो उनकी properties, more specifically उनकी chemical properties different होती है. Now to understand this better, let's take another example. Now so here we have what? Here we have another example. Let us consider that there is a substance called A, which is bonded with a substance called B. Now, this substance, that is AB, is what? It is being reacted with another substance which is C. Now, what is going to happen? After the reaction, we are able to see that A is what? A is making bond with C, and now B is formed. So if I ask you that what actually is happening in this condition, so can we say that पहले reaction के पहले A जो था वो B के साथ bond बनाया था. After the reaction what happened is that A जो है वो किसके साथ bond बना लिया? C के साथ, and B जो है वो क्या हो गया? अलग हो गया. So can we say that in a chemical reaction there is also a rearrangement of certain elements, rearrangement of bonds? Yes or no? So let's write these points and let us summarize this thing. Atoms of one element do not change. What does this point means? कि chemical reaction में एक element का atom नहीं change होता था. Like if we take an example, suppose Na plus Cl is giving us NaCl, right? अब ऐसा नहीं हो रहा कि यहाँ पे Na जो है वो आयरन में कन्वर्ट हो गया,
या क्लोरीन जो है वो सल्फर में कन्वर्ट हो गया, नो। एटम्स वही रहेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स होंगे, नए बॉन्ड्स बनेंगे, कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, राइट? So let us see the second point, that old bonds are what they are broken and new bonds are formed. So these are the things which happens in our chemical reactions. Now let us move on, and before starting the exact part of this chapter, we need to learn some of the terms. So one basic term is about the reactant and the second one will be the product. So let's see what actually reactant and product is. Now let's see an example. Again we have the same reaction, that is the formation of NaCl. Now अगर मैं तुम्हें पूछूं कि Na जो है वो product होगा या reactant होगा? Yes, exactly. So Na will be reactant. And if I talk about the chlorine, so will it be product or reactant? It will also be reactant. But if I ask you about the NaCl, ये रिएक्शन के बाद फॉर्म हो रहा है, सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी प्रोडक्ट. लेट अस सपोज दैट हमें केमिकल रिएक्शंस देखना. नाउ लेट्स सपोज दैट इफ आई आस्क यू ऑल कि केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाउ वी आर गोइंग टू नो दैट देयर इज अ केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन. सो वी हैव फ्यू चेंजेस. उन चेंजेस को ऑब्जर्व करके हम ये देख सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं. सो वन इज द चेंज इन कलर, सेकेंड इज द चेंज इन स्टेट, थर्ड इज द चेंजेस इन टेम्परेचर. अब टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. नाउ इफ सपोज दैट इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो कोई गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई गैस इवॉल्व हो रही है, सो तब भी हम कह सकते दैट देयर इज अ केमिकल रिएक्शन अंडरगोइंग. And next there is a formation of precipitate. So in all these scenarios we can say that there is a chemical reactions which is undergoing. So can we consider these changes as the characteristic of chemical reactions, because they are defining that the chemical reactions are going on. Now before ending this session I have a question for you. Now the question is that here are three things. One is what? That is dissolving of salt in water. Second, I have that making of wooden furnitures. And third case, we have baking of cookies. Everyone likes cookies, yes or no? Now what you have to do is that you have to think it and you have to classify them whether they are the physical change or the chemical change. And in the next class, I'm going to ask you the answers about this question. आई होप दैट आज के सेशन में जितने भी कंसेप्ट है आपने उसको क्रिस्टल क्लियर समझ लिया. बट अब क्या करना है, कंसेप्ट समझने के बाद वी हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स. अभी जो शॉर्ट नोट्स है वो काफी हेल्प करता है हमारे एग्जाम टाइम पे. शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद वी शुड प्रैक्टिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. ना यहाँ पे क्वेश्चंस का क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वेश्चंस की क्वालिटी मैटर करता है. एंड फाइनली we don't have to neglect the practical based questions, right? Chemistry is all about the practical, chemistry में बहुत सारे reactions होते हैं, तो practical based questions exams में बहुत आते हैं. So now if I talk about ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है तो बहुत टाइम लग जाएगा हर एक चैप्टर्स के लिए, because I completely understand हमारे पास बहुत सारे subjects. So to make this easy for you, what I have brought is that 3 best books for the chemistry. Yes, you heard it right. सबसे पहले अगर मैं इस बुक के बारे में बात करूं, so this book contains the summary with tips and tricks so that कि आप सारे chapters को एक concise manner में फटाफट से रिवाइज कर सको. इसमें बहुत सारे टिप्स मिलेंगे, बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे. नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट? वी हैव अनदर बुक. ऑब्वियसली शॉर्ट नोट्स बन गया, रिवीजन हो गया, अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. ना यहाँ पे 400 क्वेश्चंस इन टोटल है, एंड ये 400 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत होती है वर्ड्स में आने की. सो रादर देन डूइंग मल्टीपल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस करने से अच्छा है कि हम कुछ क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस करें विच यू आर गोइंग टू गेट इन दिस बुक. एंड
Last one, we have a solution for practical based questions. This book contains 50 plus practice questions and साथ ही साथ में एक टेबुलर फॉर्म में सारे कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स कलर्स वो सारी चीज दे रखी है ना। अगर आप ये तीनों बुक्स को दैट इज शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए, यू हैव सॉल्व 400 क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस भी करके गए, सो आई कैन promise you that you can score 100% in your board exams. Now, from where you have to access this book? The link will be provided in the description. You can go to Amazon and you can purchase this book. Thank you everyone. Bye bye.